أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. In our today lecture, we will be talking about the non-destructive testing (NDT) of concrete, cracks repairing, and precast concrete. So I hope everybody can see the slides and everybody can hear me. Ahmed Tariq, Mansoor Khan. Mansoor Khan beta, can you hear me? Yes, sir. Our slides भी नजर आ रहे हैं सबको? मंसूर बेटा, slides नजर आ रही हैं सबको? जी सर. Okay beta. So in the non-destructive testing of concrete, we will be talking about non-destructive testing of concrete. Then we will be talking about the different methods which we can use for non-destructive testing of the concrete. That is the penetration method, rebound hammer method, and ultrasonic pulse velocity method. In the cracks repairing lecture, we will be talking about introduction to the cracks. Then we will be talking about types of cracks. And finally, we will be talking about the methods of repairing the cracks. And in the precast concrete lecture, we will be talking about introduction to precast concrete. Then we will be talking about application of precast concrete, how where we can use or where we are using this precast concrete. Then how we can manufacture the precast concrete. Then how we can install the precast concrete elements on site. And finally, the concrete masonry units. So the non-destructive testing of concrete. Normally, we are calling it NDT on concrete, non-destructive testing. It is a method of testing of existing concrete structure to assess its strength and durability. And this method, what we can do, we can perform these tests on existing structures which are 30 or 40 years old, and we want to find its capacity or its strength and its properties, so we can perform these tests on these existing buildings or existing structures. In the non-destructive method of testing, without loading the specimen to failure, or that is without destructing the concrete, we can measure the strength of the concrete. In this non-destructive testing, we are not going to destruct the structure or the concrete. Without destructing the concrete, we can find the strength of the concrete, and we will be explaining this in the next slides how we can do this. Nowadays, this method has become a part of quality control process. This process or this method, it is now included in the quality control process of concrete. This method helps us to investigate the crack depth, the micro cracks, and the deterioration of concrete. With the help of this NDT test, we can find the crack depth, we can use some scanners, we can find the micro cracks in the concrete, and we can find the cracks or the deterioration or the damages in the concrete. It requires skilled and experienced persons. These tests cannot be performed by a layman, but this needs skilled people or experts. Here you can see this is the Schmidt hammer, and this is the ultrasonic pulse velocity test in progress. We will discuss this one by one. What is the importance of NDT on concrete? So, estimating the compressive strength, quality, and uniformity of the existing concrete. With the help of this NDT, you can find the compressive strength of the concrete, you can find then the quality of the concrete, and you can say either it is a durable, it is porous, it is uniform, it is dense, or it is have some damages or cracks. Locating and categorizing the cracks. With the help of these tests, you can locate the cracks and you can categorize the cracks. You can find the voids in the concrete. You can also find the honeycombing and other defects in the concrete structure. Monitoring the changes in the structure of the concrete. With the help of these testing, you can monitor the changes in the shape and the aesthetic appearance of the structure. You can monitor with the help of these tests. Determining the position, quantity, or condition of reinforcement. With the help of scanners, with the help of these testings, you can also find the position where the steel bar has been installed, whether it is at the correct position or at the wrong position. How much quantity or how much number of bars has been used in this in the structure or the steel bars, and what is the condition of these steel bars, either it is corroded or non-corroded. We can also find the chloride, the sulfate, and the alkali contents in the concrete if you can get smaller samples, and then we can perform tests on those samples in the laboratory. Now, non-destructive testing methods. So there are in this lecture we are discussing these three methods. There are some other methods as well. So number one is the penetration method, the rebound hammer method, the ultrasonic pulse velocity method.
So we will discuss this one by one, how we can perform these tests in the field. So in the first one, this is the penetration resistance test on concrete, and we are performing this according to ASTM C803. The penetration resistance test is conducted on concrete structure using the Wentzer probe test machine. You can see this is the Wentzer probe test machine. With the help of this, we can find the penetration inside the concrete, and then from that penetration, we can find the strength of the concrete. So anyone in the class who can tell me what will be the relationship of this penetration with the strength of the concrete? Muhammad Ahmed, can you tell us सर if the जितना penetration is more? जी बेटा, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा सर उतनी स्ट्रेंथ हमारे पास वीक होगी. penetration अगर ज्यादा होगी तो लो होगा सर. strength कम होगा. Good, excellent बेटा. So equipment consists of a powder activated gun. You can activate it. You can activate it, or you can activate it, or you can hit it with the help of powder activated gun or driver. This hardened alloy steel rod or probe, you can call this probe or hardened steel alloy or rod. This is a gauge for measuring penetration of probe and positioning the device. With the help of this, what you can do? You can run it, or you can hit this concrete with the help of this gun or this driver, and then we are measuring the penetration in millimeter per second or in feet per second, and then we are correlating that penetration with the strength of the concrete. In this method, a steel probe is fired on the concrete surface by a sudden explosion. The purpose of the penetration resistance test is used to determine the uniformity of the concrete, specify the poor quality or deterioration or cracks in the concrete zones, and evaluate the in-place strength of the concrete. With the help of this, we can find the strength of the existing concrete in the field. The penetration is inversely proportional to the strength of the concrete. If the penetration will be more, the strength will be less. If the penetration is less, the strength will be high. Penetration resistance test is conducted to estimate the strength of concrete on site for early form removal or to investigate the strength of the concrete in place because of low cylinder test results. अभी कहाँ पे हम यूज करते हैं ये टेस्ट? जब when we are making the cylinders and then we test those cylinders after 28 days. तो अगर 28 डेज के बाद आपके पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ है उससे कम स्ट्रेंथ दे रहा है आपके सिलेंडर्स, तो आपका शक आ जाता है कि साइड पे भी इसी तरह काम हुआ होगा, या आप टेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है कंक्रीट है इसने स्ट्रेंथ पकड़ी है कि नहीं है. तो अगर इन्होंने इसने स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पकड़ी है तो यू कैन रिमूव द फॉर्मवर्क एंड यू कैन यूज दैट फॉर्मवर्क इन सम अदर प्लेसेस. So what you can do, you just go to the field and you perform all these tests on the concrete, and you find a good strength, then you can allow them, you can pay to the contractor. But if it is not giving you the required strength, there is a major difference in the strength of the concrete, then either you can go for rehabilitation or retrofitting of their structures, or you can order them to demolish it and reconstruct it. Here is the graph from which you can find the compressive strength of the concrete. So on the x-axis you can see the penetration rate in millimeter per second. This is of this probe or this rod. Okay, and on the y-axis you can see the compressive strength in megapascal. So here you can see when this penetration rate is less, this is 1 millimeter per second, you can see the strength is very, very high. But if it is 4, you can see this is very less. This is 20 megapascal, but at 1 it is almost 50 megapascal, almost 2.5 times of this 4 millimeter per second penetration. Then with the help of this equation, you can draw a trend line on this data. This is the data, which these points are showing the data. And then with the help of this equation, you can find this y is equal to minus the x plus the. So this x is actually showing the penetration rate in millimeter per second, and this y is giving you the compressive strength in megapascal. So if you can have this x value, you can find this y value. This you can do this by yourself. You can do this. You can make this in the Excel sheet. If you go to the field, you got this. You can get this data. Then you plot this, the penetration rate in millimeter per second and the compressive strength in megapascal. The next one is the rebound hammer method. The rebound hammer method, which you people have seen in the slide. The Schmidt hammer, we are also calling it Schmidt hammer. So the rebound hammer test is a non-destructive testing method of concrete
which provide a convenient and rapid indication of the compressive strength of the concrete. With the help of this test or with the help of this equipment, we can get the compressive strength of the concrete rapidly. The rebound hammer is also called a Schmidt hammer that consists of a spring control mass that slides on a plunger with a tubular housing. You can see over here, this is the plunger, this is the spring, and this is the weight. We are compressing it from the top, then we try to compress it completely, and we place it on the concrete surface. First we clean the concrete surface, and then we perform these tests on this surface. So when it will be rebound, when you are pressing it, it will rebound with a sound, with a loud sound, and when it will give you reading on this scale. So from this scale, you can read the value, the figure, and then from that figure you can calculate the strength of the concrete by this way. You can also perform some partial destructive testing, which you will see in these slides. Yeah, I will explain this over here. You can then correlate, or you can calibrate the Schmidt hammer values or Schmidt hammer test results with the help of these cylinders test as well. So the rebound hammer is also called, we have explained this. When the plunger of the rebound hammer is pressed against the concrete surface, as I told you, the spring control mass in the hammer rebounds. ये rebound हो जाता है और आपको reading दे देते हैं scale पे. The amount of rebound of the mass depends upon the hardness of the concrete surface. Now, if the surface is very hard, it will give you high value. If the surface of the concrete is soft or weak, then it will give you less value. A concrete with low strength and low stiffness will yield in a lower rebound value. Here you can see the extent of rebound, which is a measure of surface hardness, is measured on a graduated scale. This is the graduated scale. This measure value is designated as rebound number or rebound index. इसको rebound index भी बोलते हैं और rebound number भी बोलते हैं. Then on this Schmidt hammer, here you can see this graph. So you can calibrate it, or you also use these graphs for finding the compressive strength of the concrete from the number of the Schmidt hammer number or rebound number. Normally we are taking these numbers almost, we are taking 10 value from this side, so that we can cover more area, and then we can take average of these 10 values. Now for partial destruction testing, you can see we are using this core machine. With the help of this, we are taking cores from the existing structures, from the existing slabs, columns, and beams, or even foundation. Then what we do, we bring that to the lab and we perform this compressive strength testing for those cylinders, and we can get direct compressive strength of this concrete cylinder. Then with the help of these cylinders, we plot this on the y-axis and we calibrate this with this number at the same location. जहां से हमने कोड लिया हुआ है, वहीं पे हमारे पास ये श्मिट हैमर के वैल्यूज भी मौजूद है. इन दो का हम एक्सेल शीट में प्लॉट करते हैं, इसी तरह प्लॉट करते हैं, फिर उस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, वहां से हमें इक्वेशन मिल जाता है, और फिर उसी इक्वेशन में अगर हम दोबारा सिर्फ स्मिथ हैमर टेस्टिंग करें उसी पूरे बिल्डिंग में, और हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद हो, तो वी जस्ट नीड द रिबाउंड नंबर. वही रिबाउंड नंबर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिल जाएगी. This the last one, this ultrasonic pulse velocity method, and this we perform this is according to HTM C59709. And this method, this has a potential of testing the concrete strength and situ. साइड पे आप जाके इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, and is applicable to assess the uniformity and relative quality of the concrete. With the help of this, you can find the uniformity of the concrete and strength of the concrete, and then you can correlate this with the quality of the concrete. To indicate the presence of wires and cracks, yes, you can find the presence of wires and cracks as well in the concrete. It is also applicable to indicate the changes in the properties of the concrete. It can help you that whether this concrete is of uniform quality, homogeneous, or there are some changes on the surface that has good quality, then on the inner side it has low qualities or good qualities. Whatever it is, it will give you that result. It measures the time of travel of an ultrasonic pulse wave. क्या होता है कि इसमें एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेव जनरेट होता है, जहाँ पे you can see over here, this is transmitting transducer. With the help of this transmitting transducer,
we are creating or we are generating ultrasonic pulse wave. Then this pulse wave is traveling and passing from this concrete. Then it is received in this receiving transducers, and we are noting, we are finding the time uh, which has been taken by this wave from here while traveling from here to here. So then we divide this length by the time, and we can find the velocity which this waves has traveled from this concrete. So from that velocity we can find the strength of the concrete. Now anyone in the class who can tell me अगर velocity ज्यादा होगी तो concrete की strength क्या होगा, अगर velocity कम होगी तो strength क्या होगा? सर Please, जब anyone in the class? वेलोसिटी जब कम होगी तो हमारे साथ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वाइस वर्सा। No, you are wrong. This is reverse. Ultrasonic pulse waves are generated by an electroacoustical transducers that is held in contact with one surface of the concrete under test. After traveling through the concrete, the pulse are received and converted into electrical energy by a second transducer located at a distance L, as shown over here, from the transmitting transducer. The transit time T is measured electronically. The pulse velocity V is calculated by dividing L by T. So if it is taking less time, it means the concrete is very, very dense and the wave is transferring at very high rate, at a very high speed, and it is taking less time. So it is giving you high velocity. If it is taking more time, it means it have voids, it have pores, it have spaces, it is loose concrete, it is having less density. Now there are different methods how you can perform this on test. One student from your class or from some other class, he asked me in the Google class that if this direct transmission method is giving you good result, why we are going for this semi-direct transmission method or indirect surface transmission method. So sometimes we have no access to this surface. Sometimes we have access to the opposite surface, but sometimes we don't have access to this surface. It is in contact with the slabs or with such portion of the structures where you can't go. So then we can perform this test. If you are going to find the strength of the slab from the top, so you don't have access to come to the bottom of the slab, so then you can go for this indirect surface transmission methods. Here you can see it can be used on both existing structures and those under construction. ये आप नए स्ट्रक्चर पे भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पुराने स्ट्रक्चर्स पे भी कर सकते हैं. If large differences in pulse velocity are found within a structure, अगर एक ही स्ट्रक्चर में वेलोसिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, so it means that defective or deteriorated concrete is present. इसका मतलब है कि जो कंक्रीट इसमें यूज हुआ है that is not of good quality. High pulse velocity readings are generally indicative of good quality concrete. High velocity अगर आपके पास है तो it means you have good quality concrete. It has been used to study the effects on concrete for freeze or interaction, sulfate attacks, and acidic waters. You can also check the strength of such concrete which was exposed to freeze interaction, sulfate attacks, and acidic waters, and you can find the strength that whether it has its original strength or it has been deteriorated or degraded. It can also be used to estimate the rate of hardening and strength development of the concrete in the early stages to determine when the removal, when you can remove the formwork. So at the early age, like 20 days or 30 days or after 15 days, you can perform this on the fresh concrete as well, so that you can find if it has got sufficient strength so that you can remove the formwork and you can use it in some other places. It has a great potential for concrete control, particularly for establishing uniformity and detecting cracks or defects. Yes, you can find uh, uniformity of the concrete. You can detect the cracks inside the concrete, so you can use this for the quality control in the concrete work. Here you can see some data. This is the general condition, and this is the pulse velocity in feet per second. So you will be having excellent concrete if it is above 15,000 feet per second, the velocity. The concrete is of good quality if it is in between 12,000 to 15,000 feet per second.
is in between 10,000 to 12,000. It is a poor quality if it is in between 7,000 to 10. मंसूर खान, जुनेद शाह, यस सर। आवाज आ रही थी क्या? आप मुझे सुन रहे थे? सर नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। नहीं, कौन से स्लाइड तक ठीक चल रहा था? सर वो एक्सीलेंट वेलोसिटी और उस तक, इस तक ठीक था? इस पीछे सर एक यही सर। ये वाला ठीक था? हाँ इसी में। ये इज इट ओके? इट इज क्लियर? यस सर। और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? सर ये एक्सीलेंट वाला किया तो गुड वाला बस इसके बाद। Okay, so this is the quality of the concrete, the relationship of the quality of the concrete with pulse velocity. So here you can see, if you have excellent concrete, its pulse velocity in feet per second will be about 15,000 feet per second. If it is in between 12,000 to 15,000, it will be of good quality. It will have a question mark if it is in between 10,000 to 12,000, and it will be of poor quality if it is in between 7,000 to 10,000 feet per second. And if it is below 7,000 feet per second, then it is of very poor quality. So this is giving you some indications that which type of concrete you have. And the next lectures, that is the cracks repairing. So here we will be talking about the types of cracks, what are cracks, then how we can repair these cracks. So introduction, types of cracks and methods of repairing of cracks. So there are three basic symptoms. कौन कितने अलामात है? तीन अलामात होते हैं of de-stress in a concrete structure. अगर de-stress concrete में आ गया है स्ट्रक्चर में, तो उसमें कौन कौन से अलामात हो सकते हैं? नंबर वन, उसमें क्रैकिंग हो सकती है.
उसमें स्पालिंग ऑफ द कंक्रीट और प्लास्टर वर्क हो सकता है, मतलब उसका एक पोर्शन गिर चुका होगा या उससे स्पालिंग हो चुकी होगी। और डिसइंटीग्रेशन, दिस इज द डिसइंटीग्रेशन इज द सेपरेशन of some portions of the concrete from another portion. So reasons for their development may be poor materials. अभी कौन से reasons हो सकते हैं इन चीजों के? poor material आपने यूज किया हुआ है, poor design आपने किए, poor construction practice आपने की है, जो standard construction practice है वो आपने यूज नहीं किए, और आपकी supervision जो थी वो poor थी, आपने supervision proper नहीं किए, और a combination of all these, इसमें से एक की वजह से आपका ये मसला आ सकता है या सब की वजह से ये मसले आ सकते हैं। Now, types of cracks. There are two types of cracks on the basis of their nature, that is actio nature or anactio nature. So, actio cracks are the live cracks which are subject to further movement. ऐसे cracks जो वक्त के साथ साथ उसमें further widening आ रही हो, further opening आ रही हो, further extension आ रही हो। और anactio cracks वो cracks होते हैं कि they are dormant or dead cracks, उसमें वक्त के साथ साथ उसमें opening, widening और ये चीजें साथ साथ ना हो रही हो, which do not open, close or extend. If the magnitude of the movement, that is the opening of the cracks, measured over a reasonable period of time, say 6 months or 1 year, is sufficient to displace or show significantly, we can treat the crack as an active one. अगर आप इसको मॉनिटर कर रहे हो और इसमें वक्त के साथ साथ उसमें एक्सटेंशन आ रही हो, वाइडनिंग आ रही हो, तो these are called active one. If the moments, that is the opening of the cracks, are smaller, that is very minor, or there is no openings, then these cracks may be considered as dormant or dead cracks. In order to determine whether the cracks are active or dormant, periodic observations are done utilizing various methods. आप periodically इसको monitor कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं इसमें ये active cracks है और dormant cracks है। Number one, how you can do this? By placing a mark at the end of the crack. अगर आपके पास ये crack है तो यहाँ पे एक ड्राते और फिर आप दो हफ्ते के बाद देख ले इस मार्क से नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अ पेन और टूथ पिक आप क्या करते हैं, एक पेन आप रखे, पेपर पेन या क्रेक के अंदर रखे, is lightly wedged into the crack and it falls out if there is any extension of the defect. अगर इस क्रेक की एक्सटेंशन हो रही हो तो ये जो पेपर पेन आपने रखा हुआ या जो टूथ पिक रखा हुआ है ये उसमें से गिर जाएगा। A strip of notch tape works similarly. आप क्या कर सकते हैं कि आप स्कॉच टेप भी रख सकते हैं। स्कॉच टेप क्या होगा कि वो पट जाएगा अगर उसमें एक्सटेंशन आ रही है। Movement is indicated by tearing of the tape. The device using a typical vernier caliper is the most satisfactory of all. दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप वर्नियर कैलिपर यूज करें। वर्नियर कैलिपर से आपको उसके डायमेंशंस का, उसका जो विड्थ है वो सब कुछ आपको पता चलेगा। Where extreme accuracy is required, resistance strain gauges can be glued across the crack. आप strain gauges भी use कर सकते हैं, they can give you the strain in the concrete. So this is the marks you can mark on the concrete cracks. तो अगर extension हो रही तो आपको पता चलेगा। You can place a pen or toothpick inside the crack. You can use a scotch tape or you can use a gauge points. Here you can see this one and this you can measure with the help of vernier caliper or strain gauges. Now, on the basis of structural and non-structural components, here are two types of cracks. One is the structural cracks and the other is the non-structural cracks. अभी अगर सिविल इंजीनियरिंग साइड पे हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो स्ट्रक्चर का लोड बर्दाश्त करते हैं, जिसपे स्ट्रक्चर स्टैंड करता है। अगर आपका लोड बेयरिंग वॉल्स है तो वॉल इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसमें आपके जो बीम्स है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। So structural cracks are those which results from incorrect design. अगर आपने इन कंपोनेंट्स की डिजाइन सही नहीं किया होगा, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की हो और ओवरलोडिंग, जिस लोड के लिए आपने डिजाइन किया उससे ज्यादा लोड आपने अप्लाई किया हो, तो इन दिस में एंडेंजर द सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड इनमेट्स। इसके फेल होने से आपका जो पूरा स्ट्रक्चर वो हो सकता है, अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उनके जान को खतरा हो सकता है। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स कौन से हो सकते हैं? जो नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स आर occurs mostly due to internally induced stresses in the building materials. ये non-structural components कौन से होते हैं? Let me define this. Let's say आपने पैरापेट पर्दा वॉल बनाई हुई है छत के ऊपर, आपने गार्डन वॉल बनाई हुई है, आपने चारदीवारी की है, तो these are non-structural components. इसमें अगर cracks आ जाते हैं तो उसको हम non-structural components, cracks and non-structural components हम कह सकते हैं। लेकिन on the basis of cracks, such cracks जो minor cracks हो जिसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर की फेलियर ना हो, आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स की फेलियर ना हो, तो they are also called non-structural cracks.
These cracks normally do not endanger the safety but may look ugly. ये आपको जो नजर आएगा वो बहुत बदसूरत होगा. Create an impression of faulty work. आपको इस तरह लगेगा कि ये जो काम है ये गलत हुआ है. Or give a feeling of instability, और आपको ये लगेगा कि ये स्टेबल नहीं है. Cracks due to shrinkage and freeze-thaw are called non-structural cracks. Suitable method for repair of cracks in concrete can be selected based on evaluation of the crack and structure for its causes. अगर आपको काज का पता चल जाए कि ये क्रैक्स किस वजह से है, so first you have to remove the cause, और उसके बाद उसी क्रैक्स के पैटर्न को, उसके वाइडनिंग को, उसके उस कंडीशन को देखते हुए फिर आप उसकी रिपेयर कर सकते हैं. उसके लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स डिस्कस करेंगे. I hope you will enjoy and you will learn something when we will be discussing those methods. Is it okay, Muhammad Umair? Is it clear? Fahad Ali? Khan? Yes, sir. Is it okay? Everything is fine? Yes, sir. Okay. So, for example, if the cracking was primarily due to drying shrinkage, then it is likely that after a period of time the cracks will stabilize. अगर dry shrinkage की वजह से cracking हो रही है तो टाइम के साथ वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी. On the other hand, if the cracks are due to the continuous foundation settlement, अगर आपकी बुनियाद जो आपका स्ट्रक्चर का बुनियाद है उसमें पानी जा रहा हो या उसमें कोई वायर्स जो फाउंडेशन है उसकी हो रही हो अंदर जा रहा, तो रिपेयर विल बी आफ्टर द सेटलमेंट प्रॉब्लम इज करेक्टेड. उसके लिए सबसे पहले आपने उस सेटलमेंट को आपने स्टॉप करना होगा. उसके जो फाउंडेशन है उसकी उसमें आपने कुछ इस तरह अंडरपिनिंग या वो जो भी है आप उसको करें साइड से, आप उसमें पानी की जो फ्लो है उसको बंद कर दें. फिर उसके बाद आप क्या करें कि उसकी रिपेयरिंग करें तो वो दोबारा उसमें क्रैक जनरेट नहीं होंगे. अदरवाइज अगर आप टॉप से उसकी मतलब खूबसूरती वगैरह करें, सुर्खी पाउडर लगा दें, तो फिर क्या होगा, अगर आपने काज रिमूव नहीं किया है तो क्या होगा, वो दोबारा वो क्रैक्स आ जाएंगे उसमें. So there are different methods of this repairing of cracks. The first one is the bonding with epoxies. आप epoxy material यूज कर सकते हैं और उसके जो cracks है उसको आप बंद कर सकते हैं. Cracks in concrete may be bonded by the injection of epoxy bonding compounds under pressure. प्रेशर के साथ आप उसको इंजेक्ट करते हैं इन क्रैक्स में और इन क्रैक्स को आप बंद कर देते हैं. Usual practice is to drill into the crack from the face of the concrete at several locations. आप मुख्तलिफ लोकेशन से इसको टॉप से इसको इंजेक्ट करें और इसको बंद कर दें. Inject water or a solvent to flush out the defect. Allow the surface to dry. Surface seal the cracks between the injection points. Inject the epoxy until it's flow out of the adjacent section of the cracks or begins to bulge out the surface seal. आप क्या करें, सबसे पहले आप इस क्रैक्स को आप वॉश करें, इसको साफ करें, इसको खुश करें. फिर आप मुख्तलिफ जगहों पे आगे हम बताएंगे आपको कि आप 6 इंच सेंटर अगर यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है तो ये सरफेस पे बर्न हो जाएगा, इसकी स्वेलिंग हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि ये जो क्रैक है ये फेल हो गया. आप इस जगह पे आप आ जाए, यहाँ से फिर स्टार्ट करें तो ये फ्लो करेगा इस तरह यहाँ तक और ये भी फेल हो जाएगा. Usually the epoxy is injected through holes of about 3 by 4 inches. कितने होल से आप कर सकते हैं, 3 by 4 inches डायमीटर से आप कर सकते हैं, एंड 3 by 4 inch deep इतने डिप तक आप कर सकते हैं. और इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को मैं बता दिया कि यहाँ से यहाँ अगर आप यहाँ पे फिल किया और यहाँ तक तो ये 6 इंच से लेके 1 फुट तक आप इसको रख सकते हैं. स्मॉलर स्पेसिंग इज यूज्ड फॉर फाइनर क्रैक्स. अगर छोटे छोटे क्रैक्स हो तो फिर आप इसको चेंज के करीब रखें, अगर बड़े क्रैक्स हो तो आप 12 इंच तक जा सकते हैं. The limitation of this method is that unless the crack is dormant or the cause of cracking is removed, thereby the crack is made dormant, it will probably reoccur possibly somewhere else in the structure. कहते हैं कि अगर आप काज को रिमूव नहीं करते हैं और इसको आप फेल करते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम क्रैक्स इस जगह पे आ जाए या इस जगह पे आ जाए, या हो सकता है अगर ये वीक जोन हो तो इसी पे दोबारा आ जाए. तो काज को आपने रिमूव करना है, जो मेन सोर्स है क्रैक का वो आपने रिमूव करना है. Also, this technique is not applicable if the defects are actually the extent they cannot be dried out or real cracks are numerous. अगर बहुत ज्यादा क्रैक्स हो और उसमें लीकेज भी उसमें लीक हो रही हो तो आप ये वाला प्रोसीजर यूज ना करें.
नेक्स्ट मेथड के अंदर कौन सा है कि राउटिंग एंड सीलिंग। आप क्या करें कि ये जो क्रैक है इसकी राउटिंग करें, इसकी वाइडनिंग करें और फिर उसके बाद इसको सील करें। इसे दिस मेथड इन्वॉल्व्स एनलार्जिंग द क्रैक एट स्पेस, जिस स्पेस पे ये एक्सपोज और एनलार्ज करे उसकी ब्रेथ जो है उसको बढ़ाए टॉप सरफेस पे, उसको थोड़ा सा से या कोई और उससे इक्विपमेंट से आप उसको वाइड करें, साफ करें एंड देन फिलिंग एंड सीलिंग एट विद सुटेबल मटेरियल, फिर सुटेबल मटेरियल से उसकी फिलिंग करें और उसको सील करें। द राउटिंग ऑपरेशन प्लेसिंग द सीलेंट, फिर आप क्या करें कि राउटिंग ऑपरेशन करें, वाइडनिंग करें, इस क्रैक को थोड़ा सा वाइड करें, साफ करें, फिर सीलेंट लगा दें, एपॉक्सी वगैरह लगा दे और फिर उसको कवर करें। दिस इज अ मेथड वियर तारो वाटर टाइटनेस ऑफ द जॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी जगह पे आप ये वाला काम कर सकते हैं जहाँ पे वाटर टाइटनेस या वाटर प्रूफ की ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो एंड वियर अपीयरेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, और जहाँ पे ये इसी जगह पे हो ये वाले क्रैक्स जहाँ पे लोगों की नजर बहुत कम पड़ रही है, वहाँ पे अपीयरेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, एस्थेटिक अपीयरेंस ज्यादा जरूरी ना हो। द सीलेंट्स मे बी एनी ऑफ सेवरल मटेरियल्स, कौन कौन से हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एपॉक्सीज हो सकते हैं, यूरिथेन्स हो सकते हैं, सिलिकॉन्स हो सकते हैं, पॉलीसल्फाइड्स हो सकते हैं, एस्फाल्टिक मटेरियल्स हो सकते हैं, जो आप लोग ने देखो कि अपने छतों के ऊपर बिटुमेन यूज जो तार को ऑयल मोटर यूज करते हैं, ये जो फाइबर्स वगैरह ये डाल सकते हैं। साउंड शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू द लाइवलीहुड ऑफ क्रैकिंग। सीमेंट ग्राउट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट ग्राउट में क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें दोबारा क्रैक्स आ जाए। आप देख सकते हैं दिस इज द क्रैक, इसकी आप राउटिंग करें, वाइड करें, साफ करें और फिर इसमें एपॉक्सी वगैरह डाल दें और इसको सील करें। द नेक्स्ट वन इज द स्टिचिंग। जिस तरह हम बाकी चीजें सीखते थे इस तरह आप कंक्रीट की भी स्टिचिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? Stitching involves drilling holes on both sides of the crack and grouting in U-shaped metal units with sharp legs, that is just like the staples of the staplers or stitching dogs that span the cracks as shown in figure। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ड्रिलिंग करते हैं क्रैक के एक साइड पे और दूसरे साइड पे, फिर इसमें हम यू शेप ये हमने बनाया होता है जस्ट लाइक अ स्टेपल, स्टील बार से आप बना सकते हैं। इसको आप इंजेक्ट करें इसके अंदर और यहाँ पे एपॉक्स के थ्रू इसको आप फिक्स करें कंक्रीट के साथ, अंदर जो कंक्रीट है इसके साथ फिक्स करें सो दैट इट हैव अ स्ट्रांग बॉन्ड विद दिस एग्जिस्टिंग कंक्रीट एंड दिस स्टील बार्स। फिर आप क्या करें कि इसमें आगे हम बताएंगे कि आप इस तरह करें कि आप हर एक ही प्लेन में आप ड्रिल न करें, आप इसकी जो डायमेंशन है जो स्टील बार्स है, ये जो स्टेपल्स आपने यूज किए इसको चेंज रखें, इसको मुख्तलिफ उस कंडीशन डायमेंशन रखें, कहीं पे छोटा रखे, कहीं पे थोड़ा बड़ा कर दे ताकि इसकी जो ये वाली जो ड्रिलिंग पोजीशन है ये मुख्तलिफ जगहों पे आ जाए। द स्टिचिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ ड्रिलिंग होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रैक, क्लीनिंग द होल्स, इसको आप क्लीन करें, एंड एंकरिंग द लेग्स, ये वाले जो लेग्स है इसके स्टेपल्स के ऑफ द स्टेपल्स इन द होल, इसमें आप एंकर करें इसको विद हेल्प ऑफ एपॉक्सी, इसके साथ आप फिक्स करें with either a non-shrink grout or an epoxy resin based bonding system। आप epoxy reasons और glue वगैरह आप यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ। If necessary, strengthen adjacent areas of the construction to take the additional stress। इसके साथ आप उसके जो एडिशनल जो साथ वाला एरिया है उसको आप भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं so that it can take the load which is coming due to which this cracks has been taken place। The stitching staples should be of variable length and or orientation and so located that the tension transmitted across the crack does not devolve on a single plane of the section but it's spread out over an area। जैसे मैंने आपको बता दी इसको आप स्प्रेड करें। In order to resist shear along the crack, जो shear cracks वगैरह आ सकते हैं along the diagonal, it is necessary to use diagonal stitching। फिर आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक अगर क्रैक आ रहे हो तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक अगर क्रैक आ रहे हो तो these are called shear cracks, तो फिर आप इसको इसी डायरेक्शन में आप लगा दें। अभी हम क्योंकि क्रैक इस तरह आया हुआ है तो हम इसको इस तरह लगा रहे हैं, लेकिन अगर क्रैक इस तरह आ रहा हो तो आप इसको फिर ये डायगनली भी लगा सकते हैं। The length of staples are random so that the anchor points do not form a plane of weakness। आपको मैंने बता दिया कि आपको डिफरेंट डायमेंशंस का रखे so that ये वाला जो प्लेन आपका बन रहा है ये वीक न बने। Now the next method is the external stressing or the pre-stressing of the steel। अब अगर आपके जो कंपोनेंट्स है या स्लेब इसमें अगर क्रैक आ गया हो
तो यहाँ पे आपका बीम का सेक्शन, आप बीम ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप उसको इसमें टेंडन डाल दे, स्टील बार डाल दे, उसमें आप थ्रेड करें, थ्रेड आप इसमें बनाएं, फिर यहाँ से इसको फिक्स करें और यहाँ पे नट के थ्रू इसको आप टाइट करें। जब आप टाइट करेंगे तो ये क्रैक खुद बहुत बंद हो जाएगा। क्रैक्स कैन बी क्लोज बाय इंड्यूसिंग अ कंप्रेसिव फोर्स। ये आप कंप्रेसिव फोर्स इस तरफ से भी आएगा, इस तरफ से भी आएगा, तो ये बंद हो जाएगा। सफिशिएंट टू ओवरकम द टेंशन एंड टू प्रोवाइड अ रेजिडुअल कंप्रेशन। इसमें एक कंप्रेशन फोर्स आपका आ जाएगा जो स्टे करेगा इसके इस सिस्टम और इस स्ट्रक्चर के दरमियान के अंदर, और ये क्रैक उससे फेल हो जाएगा या बंद हो जाएगा। पोस्ट टेंशनिंग इज the desired solution when a major portion of a member, that is the most portion of the member is the slab or beam, or you can do this in the foundation of a member must be strengthened, or when the cracks that have formed must be closed. This technique uses pre-stressing strands or bars to apply a compressive force. We will be discussing in the precast concrete, and you will see the strands. ये strand क्या होता है? यहाँ पे let me show you. I will be explaining this. These are the strands. With the help of these strands, you can apply these pre-compression forces. So, the next is the grouting. आप सीमेंट पेस्ट सीमेंट का ग्राउट बना सकते हैं या सीमेंट सैंड का ग्राउट बना सकते हैं। दिस इज द सेम मेथड एज दैट ऑफ द इंजेक्शन ऑफ एन एपॉक्सी। वही ऑलमोस्ट सेम मेथड है। इसमें आप क्या करें कि क्रैक्स को आप साफ करें, फिर उसमें आप ये छोटे पाइप आप लगा दें, इस पे फिर नीचे से आप इसमें पाइप लगा दें और पानी प्रेशर से अप्लाई करें ताकि ये आप धो लें, इसको वॉश करें, तो ये आपका जो क्रैक है ये वॉश हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें कि जो ये आपका जो ग्राउट है उसको आप टॉप से उसमें डाल दें थ्रू प्रेशर नोजल, और जब ये नीचे से बहना शुरू कर दे यहाँ से, तो इट मीन्स कि ये क्रैक आपका बंद हो गया। यहाँ से आप उसको सील कर दे, बंद कर दे, और फिर यहाँ से भी बंद कर दे, फिर इन पाइप्स को काट दे। इसके ऊपर आप प्लास्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरह भी छोड़ सकते हैं। क्लीनिंग द कंक्रीट अलोंग द क्रैक, इंस्टॉलिंग द बेल्ट ऑफ सीट्स, इसको बेल्ट ऑफ सीट्स कह सकते हैं आप। ये बेल्ट ऑफ सीट्स है at intervals along the crack, sealing the crack between the seats with a cement paint or grout। ठीक है, इसको आप सील कर दें, फिर फ्लशिंग द क्रैक टू क्लीन इट एंड टेस्ट द सील एंड देन ग्राउटिंग द होल। आप क्या करें, इसके टॉप सरफेस पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपने सीमेंट पेस्ट डाला हुआ, इसको टॉप से हमने कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ये सीलिंग या ग्राउट हम इंजेक्ट करते हैं, तो ये ग्राउट मिक्सचर्स they contain cement and water or plus sand and water. It depends upon width of the concrete. Width of the concrete तो आप sand में तो आप simple cement and water भी use कर सकते हैं। However, the water cement ratio should be kept critical to maximize the strength and minimize the shrinking. ठीक है, water reducers or other admixtures may be used to improve the properties of the grout. आप water reducing admixtures भी use कर सकते हैं, और वाटर सीमेंट रेशो आप लो करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी और उसमें श्रिंकेज कम से कम होगा। दिस मेथड इज इफेक्टिव इन स्टॉपिंग द वाटर लीक। जब आप वाटर लीकेज आपने स्टॉप करना हो तो यू कैन यूज दिस मेथड, बट इट विल नॉट स्ट्रक्चरली बॉन्ड द क्रैक सेक्शन। लेकिन ये दो आपके जो पुराना कंक्रीट है और नया वाला है उसको प्रॉपर्ली बॉन्ड नहीं करेगा। तो हर एक मेथड के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ओवरलेस। उसके टॉप पे आप कंक्रीटिंग करें, ओवरले प्रोवाइड करें, कलर दे दे या कुछ केमिकल कंपाउंड आप ग्राउट वगैरह में डाल के उसके टॉप पे आप एक ओवरले दे दें। ओवरलेज आर द पोजीशन ऑफ 6 mm और greater in thickness that can be bonded, partially bonded or unbonded to the surface of the concrete। मुख्तलिफ ये 3 मेथड्स आप कर सकते हैं। कंप्लीटली आप बॉन्डेड उसको कर सकते हैं, पार्शियली बॉन्डेड कर सकते हैं, या अनबॉन्डेड आप कर सकते हैं। We will discuss this over here. You will see this how we can do this. The materials of overlay may be polymer concrete. आप उसमें फाइबर्स वगैरह डाल सकते हैं, पॉलीमर्स डाल सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट इससे भी कर सकते हैं, एपॉक्सीज आप यूज कर सकते हैं, पॉलिएस्टर्स आप यूज कर सकते हैं, एंड पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट भी आप यूज कर सकते हैं। ओवरलेज में ब्रिज नॉन मूविंग क्रैक्स, इससे आपका क्या हो सकता है कि जो नॉन मूविंग क्रैक्स है वो आप उसको ब्रिज कर सकते हैं, बट द एक्टिव क्रैक्स में अपीयर अगेन। लेकिन अगर एक्टिव क्रैक्स है तो उसके लिए आप यूज ना करें क्योंकि वो दोबारा अपीयर होंगे। ओवरलेज आर यूज्ड एज अ वेयरिंग फोर्स। आप इसके टॉप सरफेस पे
उसको एक कवरिंग आप दे देते हैं, एक कवरिंग शीट आप प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ वाटर, आप वाटर की इंट्रूजन जो डेम्पनेस वगैरह होती है, परमिबिलिटी आप उसकी कम कर सकते हैं। एंड क्लोराइड आयंस के फ्लो को आप स्टॉप कर सकते हैं। प्रोवाइड एब्रेशन रेजिस्टेंस, आप एब्रेशन रेजिस्टेंस इसकी बढ़ा सकते हैं। एंड मे बी डेकोरेटिव, आप इसको डेकोरेशन भी आप इसकी कर सकते हैं। देखिए आप मुख्तलिफ ये मटेरियल आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कवर दीज क्रैक्स, ये आप देख सकते हैं, ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। And then overlays are useful to seal areas with large number of cracks, बहुत ज्यादा नंबर जो क्रैक्स बहुत ज्यादा नंबर में हो और स्मॉलर क्रैक्स हो, फाइनर क्रैक्स हो, so you can use where individual treatment of each crack is too expensive, अगर हर एक क्रैक पे आप स्टिचिंग करें बाकी मटेरियल आप डाल दें तो ये एक्सपेंसिव होगा। Overlays used to seal active cracks must be extensive, must have the ability to elongate and shorten. It is important to note that the cracks are only surface sealed with unbonded overlays and not filled deep inside. कौन से क्रैक्स पे आप यूज कर सकते हैं? जो सिर्फ सरफेस पे हो, वो ज्यादा डीप ना हो, तो फिर आप ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। The next one is the most important one and the most stronger one. This is the ferro cement overlay. ये क्रैक्स अगर आ गए हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वायर मेश यूज कर सकते हैं। Here you can see this wire mesh with the help of this rod plugs and this nails. You can fix this with the help of then with the help of these nozzles and this machinery. You can inject the grout, the rich grout inside these cracks. How we can do, let me explain this. This is the wire mesh. क्या करेंगे, अगर आपके क्रैक्स आ गए तो क्रैक्स को आप साफ कर दें, फिर उसके बाद उसमें ये छोटे छोटे पाइप आप इंस्टॉल कर दें। ये आप जब आपने इंस्टॉल किया तो उसके टॉप सरफेस को आप फिर रिच मोटर से उसको कवर करें प्लास्टर से। ये देखिए ये टॉप सरफेस पे हमने प्लास्टरिंग की है सिर्फ इस क्रैक वाले पोर्शन पे। फिर यहाँ से आप पानी अप्लाई करें प्रेशर के साथ। जब ये पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये जो क्रैक है ये वॉश हो चुका है, इट इज नाउ क्लीन। फिर क्या करें, इसी मशीन के थ्रू आप क्या करें कि आपने रिच ग्राउट बनाया होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पंप एंड दिस टैंक, यहाँ से टॉप से फिर आप क्या करें कि से अपनी रिच ग्राउट अप्लाई शुरू करें। और जब इस वाले पोर्शन से निकलना स्टार्ट हो जाए, इस वाले से निकलना स्टार्ट हो जाए, तो इट मीन्स कि ये क्रैक जो है ये फेल हो चुका है। फिर यहाँ से आप सप्लाई बंद कर दे, इंजेक्शन जो ग्राउट की सप्लाई है इसको काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, और टॉप से आप क्या करें, इस तरह सारा प्रोसेस पूरे जहाँ पे क्रैक से उसके साथ ये अमल करें। और फिर इस टॉप पे आप प्लास्टर प्रोवाइड करें। ये देखिए ये प्लास्टर है। तो अभी आपको ये क्लियर नजर आ रहा है कि दिस इज ओके। आपको क्रैक्स नजर नहीं आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये क्रैक इसमें आ गए थे। फिर आप इसको दोबारा टेस्ट करें। तो ये जब इस कंडीशन में था, इनिशियल कंडीशन में इसको हमने टेस्ट किया था, और फिर जब ये वाला प्रोसेस हमने किया, रेट्रोफिटिंग इसकी हमने की, स्ट्रेंथिंग हमने इसकी की, तो फिर उसके बाद अगर आप देख ले तो ये पुराना उसका लोड डिफॉर्मेशन करो है, ये लोड है एंड दिस इज डिफॉर्मेशन। सो यहाँ पे आप देखिए ये कम स्ट्रेंथ दे रहा था, लेकिन ये मेथड अप्लाई करने के बाद इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स। ये जो पीक है यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ये आपको जो पीक दे रहा है ये इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स ऑफ दिस स्ट्रेंथ। ये देखिए आपको ऑलमोस्ट 10 किप्स है, और यहाँ पे आप देखिए ये ऑलमोस्ट 22 और नियर टू 23 किप्स आपको दे रहा है। सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गर मेथड। इज इट ओके? इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? ग्राउट बेटा अब्दुल मुनाफ, ग्राउट आप हम उसको कहते हैं कि आप सीमेंट पेस्ट को भी आप ग्राउट कह सकते हैं, आप उसमें फिर सैंड भी डाल दे तो उसको भी ग्राउट कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सीमेंट, सैंड, और आप फिर आप कुछ एक्सपेंसिव जो थोड़ा सा एक्सपेंड करें इस मटेरियल को, एपॉक्सी वगैरह भी आप डाल सकते हैं, एक्सपेंसिव कंपाउंड्स, केमिकल्स भी डाल सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन इन द क्लास? Okay, so let's talk about the last topic of today's lecture, and that is the precast concrete. We will be talking about introduction to precast concrete, application of precast concrete, manufacturing of precast concrete, then how we can install these precast concrete elements on site, and then we will be talking about the concrete masonry units, that is the concrete blocks. So the precast concrete is a form of concrete that is prepared, cast, and
shaped on side or curved on side. प्रीकास्ट कंक्रीट हम साइड पे प्रिपेयर करते हैं, वही पे प्लेसिंग उसकी होती है और उसके शेप जो 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 स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं वही आप बना सकते हैं. यूजुअली इन अ कंट्रोल फैक्ट्री एनवायरनमेंट यूजिंग रीयूजेबल मोड्स. आप रीयूजेबल मोड में ये काम कर सकते हैं और ये फैक्ट्री के कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये सारा काम होता है. While side cast concrete cast in place is poured into its final destination on site. जबकि ये जो आम कंक्रीट हम करते हैं, जिस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये साइड पे हम स्टील बार भी उसके साथ एम्बेड करते हैं और साथ साथ कंक्रीटिंग भी करते हैं. Precast concrete elements can be joined to other elements to form a complete structure. Precast element फिर आप साइड पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे कंपोनेंट्स एलिमेंट्स के साथ आप उसको कपल कर सकते हैं और साथ लगा सकते हैं. It is typically used for structural components such as wall panels, beam, column, pipes, etc. आप इससे wall panel बना सकते हैं, बीम बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, पाइप्स बना सकते हैं, इवन वाटर टैंक. गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि इससे लोग वाटर टैंक भी बना सकते हैं. Precast concrete elements may be reinforced concrete or pre-stressed concrete. आप इसे precast concrete आप इस तरह स्टील बार्स आप यूज कर सकते हैं, तो आप reinforced concrete को भी precast component precast element बना सकते हैं. और ये pre-stress है, ये गर्डर जो आप नॉर्मली आपने देखा होगा जो ब्रिज गर्डर होते हैं, इस तरह गर्डर बनाते हैं, फिर उस टेंडेंस के थ्रू हम प्री कंप्रेशन प्री स्ट्रेसिंग करते हैं. तो जब हम ये प्रेस इसका ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें इस तरह इस साइड पे इस तरह एक इस शेप में ये चला जाता है, ऊपर की तरफ ये बेंड हो जाता है. फिर इसके ऊपर लोड आता है तो पहले ये अपने इनिशियल कंडीशन में जाता है और फिर उसमें डिफ्लेक्शन आती है, तो इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. Reinforced concrete is form of concrete in which steel is embedded. The steel bar is embedded in such a manner that the two materials act together in resisting the force. इसमें क्या होता है कि both the materials, that is the steel bars and the concrete, they are taking the load at the same time. The reinforcing steel bars are meshed, absorbs the tensile, the shear force, and sometimes the compressive stresses as well in the concrete structure. In the pre-stressed concrete में क्या होता है? It is a form of concrete where initial compression or pre-compression is given in the concrete before applying the external load. External load apply करने से पहले इसमें हम pre-compression produce करते हैं tendons के through, so that the stress from external loads are counteracted in the desired way during the service period. ठीक है बेटा, this initial compression is introduced by high strength steel wire or alloys called the tendon, as I showed you, located in the concrete section. These things you can see, these are the tendons. इसको रस्सी जो भी बोल, रस्सी, tendons और strands. ठीक है बेटा, एक साइड से हम डालते हैं, वहां से फिक्स करते हैं और इस साइड से हम रेंज के थ्रू या बाकी इक्विपमेंट के थ्रू इसको हम टाइट करते हैं. जैसे जैसे आप इसको टाइट करेंगे तो इसमें प्री कंप्रेशन फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे. Reinforced concrete is usually used for structural systems due to its strength, durability and affordability. आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए आप reinforcing concrete यूज करते हैं. Addition of pre-stress is particularly useful in many structures and buildings where maximizing the strength of the concrete is essential. अगर ज्यादा स्ट्रेंथ की आपको जरूरत हो, then you can go for the pre-stressing. The addition of the wire or rebar provides tension within the concrete, which is released once covering is complete. The release of the wire or rebar tension transfers strength to the concrete, creating an even stronger material, as I told you. Then the application of the precast concrete. कहाँ पे इसकी application हो सकती है? Number one, to make beams आप इससे बना सकते हैं, columns बना सकते हैं, floor slabs बना सकते हैं, foundations बना सकते हैं, and other structural members आप building से other structural members भी बना सकते हैं. To make precast pre-stressed elements for buildings, ये भी कर सकते हैं. To make components for infrastructure projects, elements such as bridge girders आप बना सकते हैं. ये जो मैंने आपको शो किया, this is bridge girder, और ब्रिज डेक, जो ब्रिज का टॉप स्ट्रक्चर है, स्लेब है, वो भी बना सकते हैं. टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज प्रीकास्ट वाटर टैंक बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, फ्लोर बीम्स बना सकते हैं, बाउंड्री वॉल्स बना सकते हैं, वाटर पाइप्स बना सकते हैं, काफी सारी चीजें आप बना सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी द प्रीकास्ट बीम्स. ये बीम्स आप साइड पे ले जा सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं. प्रीकास्ट स्लेब, प्रीकास्ट वॉल्स हैं, इसमें इवन ओपनिंग्स छोड़े गए दरवाजों के लिए, खिड़कियों के लिए भी छोड़ सकते हैं. इवन प्रीकास्ट स्टेयर्स भी आप बना सकते हैं और साइड पे आप
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दिस आर द प्रीकास्ट वॉल पैनल, बाउंड्री वॉल भी आप इससे बना सकते हैं। दिस इज द प्रीकास्ट बीम कॉलम असेंबली, दिस इज द बीम एंड दिस इज द कॉलम, ये भी आप बना सकते हैं। इट इज पूरा स्ट्रक्चर्स आप साइड पे इसी चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह प्रीकास्ट का स्ट्रक्चर अभी चाइना ने जो बनाया है, कितने दिनों में बनाया था, 1000 बेड्स का हॉस्पिटल ये कोरोना के लिए। So all these you can make this within days or within months. बड़े बड़े structures आप बना सकते हो with the help of precast concrete. Now how we can manufacture the precast concrete on site? The production of precast concrete elements take place under controlled conditions in enclosed factory. ये normally factory में होता है और controlled condition में होता है। A denser of denser concrete बना सकते हैं, stronger concrete बना सकते हैं, better quality concrete बना सकते हैं, can be produced with minimal waste of materials। क्योंकि ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप ये सारा काम करते हैं तो ये मिनिमम वेस्टेज होगा, मटेरियल का बहुत कम वेस्टेज होगा और आप ये उसमें आप बना सकते हैं। Here is a simplified overview of the precast concrete process. कैसे करते हैं? You can do this. Precast concrete is poured into a wooden or steel mold with a wire mesh or rebar. एक ऑलरेडी पहले से मौजूद मोल्ड में आप इसकी क्या करते हैं कि आप कंक्रीट प्लेस करते हैं, उसमें पहले से या स्टील बार मौजूद होता है या मेश मौजूद होता है। ये जो ऑलरेडी मैंने शुरू किया है, क्योंकि कभी कभार जो छोटे छोटे हम बनाते हैं वहां पे हम मेश डालते हैं। इट इज केवर्ड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसकी क्यूरिंग होती है प्लांट में। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, देन द प्रीकास्ट कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ कंस्ट्रक्शन साइट एंड पुट इनटू प्लेस। फिर आप इसको साइट पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहां पे आप इसको प्लेस करते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यू विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेन्स यू कैन इंस्टॉल दिस ऑन द साइट। नाउ इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रीकास्ट कंक्रीट, यहाँ पे आपने बड़ा ख्याल करना होगा, सेफ्टी का भी ख्याल करना है, आपने इंस्टॉलेशन का भी ख्याल करना है कि ये प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट और हर एक चीज ठीक ठाक हो। The on-site installation of the precast components can be a high-risk activity involving the use of heavy cranes and person working at height. आप ऊपर हाइट पे ज्यादातर काम करते हैं, ये इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्रेन्स यूज होते हैं, तो आपने बड़ा ख्याल करना है कि ये पार्ट या ये एलिमेंट अगर किसी गिर जाता है, किसी मजदूर पे वर्क करके, तो उसके जान को खतरा होता है। So you will have to take care of all these things. You have to ensure that the people who are working over here, they are using helmets, they are using safety shoes, they are using gloves, and they are using all other required materials for their safety. Consideration should be given therefore to safeguard against risk when receiving delivery, moving and placing these units. इसका आपने बड़ा ख्याल करना है। Now coming towards the concrete blocks. So I hope you people have seen these hollow concrete blocks. These are different shapes of the concrete blocks. We can make solid blocks, we can make hollow blocks, you can make different shapes of the blocks for different purposes. Here you can see these are the hollow blocks which is under construction in the factory. Then if you are using the steel bars in these hollow blocks and then you are providing the grout, you are filling this with the concrete or with the rich mortar or with the mortar. Okay, then this masonry is called reinforced masonry. अगर ये स्टील बार आपको एक खास डिस्टेंस पर नजर आ रहे हो इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक में या ब्रिक वर्क में, तो इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स्ड मैसनरी। रीइंफोर्स्ड मैसनरी, अगर उसमें ये बार्स नजर ना हो, नजर ना आ रहे हो, यहाँ पे आपके कंफाइनिंग एलिमेंट्स भी ना हो, जिसको हम कॉलम बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, अगर पिलर भी मौजूद हो, बीम भी मौजूद हो, तो उसको हम फिर सादा मैसनरी बोलते हैं और दैट इज कॉल्ड अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी। पहले इसको जिस जहाँ पे स्टील बार्स हो उसको हम रीइंफोर्स्ड मैसनरी बोलते हैं, जहाँ पे कुछ भी ना हो, सादा मैसनरी हो, तो उसको हम अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी बोलते हैं। और जहाँ पे ये इन कॉर्नर्स पे हमने कॉलम प्रोवाइड किया हो, पिलर्स प्रोवाइड किए हो और टाई कॉलम्स प्रोवाइड किया हो, बीम्स यहाँ पे प्रोवाइड किया हो, डोर्स और कॉलम डोर्स और विंडोज के ऊपर हमने ये थ्रू आउट बीम प्रोवाइड किया हो, टाई बीम प्रोवाइड किया हो, तो फिर उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड मैसनरी। कन्फाइंड मैसनरी। अच्छा, फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं? ये परमा होता है, इसको आप फिल करते हैं और प्रेशर के साथ फिर आप ये लोड अप्लाई करते हैं और फिर यू कैन मेक दिस ब्लॉक्स। नॉर्मली जो ब्लॉक्स रोड साइड के फैक्ट्रीज पे बनते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, वेरीज फ्रॉम 300 psi टू लाइक 500 600 psi, लेकिन जो प्लांट में बनते हैं उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, दैट गोज अप टू इवन 2000 और मोर देन 2000 psi।
अभी एक टेस्ट हमने किया हुआ है ब्लास्ट लोड टेस्ट, और जो ब्लॉक उसमें हमने यूज किया तो दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, दे हैव रेजिस्टेड द ब्लास्ट लोड. One of our PhD student is working on it, and inshallah when you will come to the university, when the university will open, we will be having his PhD exam, and you will be invited in his PhD exam, and you will see that how their block have resisted this blast load. अच्छा, अभी हम टक्टाइल भी बना सकते हैं कंक्रीट से, मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं. आप अभी आप देख सकते हैं इसको, मुख्तलिफ शेप के टक्टाइल्स हम बना सकते हैं. ये देखिए, ये चीजें वाटर के लिए यूज होती है, आप लोगों ने देखा होगा. These are different shapes and types of ductile. ये मैकेनिकल साइड से जब आप आते हैं सिविल डिपार्टमेंट में क्लास लेने के लिए, तो वहां पे ये यूज हो चुके हैं. फुटपाथ पे लोग यूज करते हैं, ये आपने देखा, ये केवलिंग इन प्रोग्रेस है, ये आप फुटपाथ पे लोग यूज करते हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा. Thank you very much. This is all from my side for today's lecture. If you have any question, you can ask. जी बेटा, any question? जी बेटा, any question? Abdul Munaf says no. Any other one? Any question from anyone else? Okay, Umar Shehzad is saying no. Okay beta, if there is no question, we have done, we have covered all the course. We have covered all the course content. I have tried my best to convey all the course content in a better manner. If still there is some problem to you people in the course content or in the lectures, you can send me message on WhatsApp, you can send me email. I will try to answer your questions on time. इसके अलावा अगर कोई कमी आई तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ उसका वो माफी किया करें. फ्रॉम माय साइड आई हैव नो इशू, सारे अच्छा है. मेरी तरफ से आप सारे, अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक हुई भी हो तो मेरी तरफ से सारे माफ है. I hope you have enjoyed this lecture, and I hope you have enjoyed this course and all the online classes. Fahad Ali, Muhammad Umair, Mansoor Khan. Yes, sir. Any issue बेटा? कोई इशू तो नहीं है? No, sir. ओके, ग्रुप नंबर 4 का आज वाइवा है. ग्रुप नंबर 4 वाले भी क्लास में रह जाए, और जिनसे वाइवा मिस हो गया है वो भी स्टे, दे आर रिक्वेस्टेड टू स्टे इन द क्लास. उनसे हम वाइवा लेंगे वाइवा वाले क्लास में, और बाकी लोगों से आप ओके. आई मिस्ड वन थिंग. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द यूनिवर्सिटी, आपको काउंसलिंग की जरूरत हो, आपको इंटर्नशिप की जरूरत हो, आपको और किसी हेल्प की जरूरत हो, you can talk to me anytime. ठीक है बेटा, you can send me message. आपको कोई काउंसलिंग की जरूरत हो, आपको किसी हेल्प की जरूरत हो, आपको किसी और मसला होगा, and if you want that you can discuss with me. I am of some help, so you can talk to me. Thank you very much बेटा.